Now, as political showdown continues over Patiala clashes, Hindu groups have called for Patiala Bandh tomorrow after the violence that broke out between Shiv workers and Khalistan supporters. Yesterday, they're demanding arrests of the Khalistani supporters who tried to enter the Kali Mata temple, pelted stones near the premises. So far, police have arrested, in fact, they've registered 4 FIRs, although the charges on which FIR is lodged still remains unclear. Punjab government today transferred the Inspector General of Police, the IG, the Patiala Range and Senior Superintendent of Police, the SSP, and the Patiala and Superintendent of Police, SP as well, with immediate effect on Punjab Chief Minister's directions. Amid brewing communal unrest in Patiala, heavy police has now been deployed to maintain law and order. As per the latest Punjab government order, internet services will remain suspended until the 6th. In fact, it will be suspended today until 6 p.m. in Patiala. Violences broke out yesterday after a procession held by the Shiv workers came face to face with the Khalistani group, leaving 4 people injured in the clashes. Punjab's Shiv leader, Harsh Singla, who gave a call for anti-Khalistan march, was yesterday arrested by the police. ये मसला 2 समुदायों का नहीं था, ये 2 पॉलिटिकल पार्टियां आपस में उनके वर्कर लड़े थे और पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है। तो पुलिस अधिकारियों को बदल दिया गया है और अभी पीस कमेटी की मीटिंग चल रही है, सब कुछ हो। FIRs have been lodged in 3 circumstances. एक ਤਾਂ ਕੱਲ cross FIRs were lodged unknown ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ FIRs lodged ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਮਸ ਐਕਟ various sections have been used, so FIRs have been lodged. पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है ते रेड्स have also been conducted. हम कोई भी शरारती अंसर को साथ ना दें। अगर कोई ऐसा आपके सामने आता है हमें बताइए, we are taking action. Please, I'm again requesting, don't panic about the internet services not being available to you. 9:30 to 6 p.m. internet services may not work, but that is only to ensure कि कोई rumor mongering and अफवाहें जैसे कल हुई थी वो ना हो। एक्चुअली ऐसा है कि सिख फॉर जस्टिस जो देशद्रोही आतंकवाद के समय से गुरप्रीत पन्नू यहाँ से भगोड़ा होकर अमेरिका में बैठा है, वो कोई ना कोई शरारत करता है। अब उसने हिमाचल और हरियाणा में 29 तारीख को ऐलान किया था कि सभी डीसी ऑफिसों पे झंडे लहरा के खालिस्तान दिवस मनाऊंगा। हमारे संगठन ने हरियाणा और हिमाचल में कार्यक्रम रखे हुए थे, पटियाला में कोई कार्यक्रम था ही नहीं, लेकिन यहाँ शिवसेना का एक कार्यक्रम उनके विरोध में मार्च था। तो यहाँ पूरे पंजाब के जो कट्टरवादी खालिस्तानी थे सुबह से इकट्ठे पटियाला में हुए, लेकिन काली माता मंदिर में कोई कार्यक्रम नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत सबसे बड़ा उत्तर भारत का प्रसिद्ध मंदिर काली माता में यहाँ पे उन लोगों ने 500-700 ने 3 बार हमला किया। ये तो मौके पे लड़के थे जिन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब देके मंदिर का नुकसान नहीं होने दिया, वरना पूरे पंजाब में आग लग जाती अगर मंदिर का नुकसान होता। ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुए, इसीलिए रोष के बदले हमने बंद कर दिया। आज पूरा शहर बंद है। नहीं, आप बार बार कह रहे हैं कि कोई शरारती तत्व थे, कौन थे वो शरारती तत्व? खालिस्तानी समर्थक थे। प्रशासन को पता है, हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि पर्चा दर्ज करके उनकी अरेस्टें हो, क्योंकि इस देश के अंदर खालिस्तान बनाना देशद्रोह है। वो सरेआम सड़कों पे नारे लगा रहे हैं, धरने दे रहे हैं, इतने लोग मंदिर पे आके हमला कर रहे हैं, एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन को गिरफ्तार करना चाहिए उन्हें। तो आज गिरी महाराज जी, आज के लिए क्या आह्वान किया गया है? आज पटियाला शहर बंद है, लोगों का माई के साथ जुड़ाव है, बहुत से लोग हैं, लोगों ने सुबह से अपनी दुकानें बंद रखी हुई हैं। अभी हमारा धरना मंदिर के बाहर स्टार्ट होगा, प्रशासन सारा आ रहा है। अगर हमारी डिमांड पूरी होती है तो ठीक है, नहीं फिर शहर में मार्च भी निकाला जाए। क्या डिमांड किया आपने, क्या चाह रहे हैं अब आप? कि जिन लोगों ने हमला किया उन पे पर्चा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए तुरंत। All right, now amid the raging Azhar versus Hanuman Chalisa controversy, Maharashtra Navnirman Sena Chief Raj Thackeray has left Pune for Aurangabad, where he's in fact slated to hold a rally there about the use of loudspeakers in mosques. The rally is now being held in the backdrop of ultimatum given by Thackeray to remove loudspeakers from mosques in Maharashtra by the 3rd of May. Thackeray has now been praising the Yogi government for pulling down loudspeakers from mosques, has even asked the Mahavikas Aghadi government in Maharashtra to learn a thing or two from the UP government. In fact, the Mahavikas Aghadi has now organized Maharashtra Sadbhavana Nidhar Sabha in Pune. Leaders of the Congress Nationalist Party, leaders of the Shiv Sena, along with those of the Communist Party of India, have jointly called for this Sadbhavana rally. मला जो काही नमाज पढायचा आहे, तुम्हाला जी काय अजान द्यायची आहे घरामध्ये द्या, आणि जर सांगून जर समजा तुम्हाला समजत नसेल की हे भोंगे खाली उतरवा
तुम्ही आम्हाला विनाकारण त्रास देऊ नका हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार. राज ठाकरे साहेबांची जो परिक्रमा कर रहे हैं वो सब शांति से होना चाहिए और जो सभा के लिए जा रहे हैं साहब की सब पंडित जी का ब्राह्मण पुरोहित का आशीर्वाद है. राज साहब पे बरसाए जाएंगे. सारे जो पुरोहित यहाँ पर आए हुए हैं उनकी तरफ से राज साहब पे बरसाए जाएंगे आशीर्वाद के रूप में. ये पूरा हिंदुत्व का एक माहौल यहाँ पे तैयार हुआ है. मंगलमय वातावरण है. ये मंगलमय वातावरण है. सब गुरुजी हमें शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं. ये शुभ आशीर्वाद हमें इसके आगे हिंदुत्व का काम करने के लिए प्रेरणा देंगे. पूरे देश भर में आज से हिंदुत्व का वातावरण शुरू हो गया है. ऐसे यहाँ पे माहौल है. Now, the debate over loudspeakers is only getting louder. In Yogi Adityanath's rule, Uttar Pradesh, over 37,000 odd loudspeakers have been pulled down. The volume of nearly 55,000 have been muted. This includes both temples, mosques. But in Rajasthan, loudspeakers were lined up on street light poles in Jaipur, outside the Jama Masjid, during the month of Ramzan. Many of them offered prayers on the streets. Here, a comparison on the UP model and the Rajasthan model. Let's have a look. Uttar Pradesh is getting quieter. In just the last few days, thousands of loudspeakers have been removed across the state in crackdown on noise pollution. The Yogi government's move has won praise from MNS Chief Raj Thakre, who's been campaigning to stop Azan being played on loudspeakers in Mumbai. But a BJP ally who's a minister in the Modi government has criticized the Uttar Pradesh government. हाँ तो मेरी पार्टी जो है जहाँ मस्जिद है मस्जिद का संरक्षण करेगी. अगर कोई भोगे निकालने के लिए आते हैं तो इसका विरोध मेरी पार्टी के लोग करेंगे. और मेरी पार्टी ये भी मानती है कि जो मुस्लिम समाज के जो मौलाना है जो उल्टी सीधी बात करते हैं उन्होंने भी मतलब शांति की भाषा करनी चाहिए. While Yogi's relentless campaigns continues in neighbouring Rajasthan, politics has exploded after loudspeakers were set up outside a mosque in Jaipur. If Azan loudspeakers were allowed in Jaipur, so was namaz on roads. A stark contrast to how the Friday prayers were offered in Uttar Pradesh. This is the difference between the Yogi model, which applies the law without fear and favour on everybody equally, and the difference between the secular Dhungi model that we see in Maharashtra or in Rajasthan. Now, on the one hand, these people have been imposing sedition law against those who want to chant Hanuman Chalisa in public. But on the other hand, one particular vote bank, for the vote bank, one community is allowed these privileges, whereas the rules are violated, the Supreme Court guidelines are violated, and all kinds of vote bank veto is given to one particular community. हम सबको अच्छा लगता है ये योगी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं. योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बहुत बड़े दंगे की साजिश से बचाया है. मैं योगी जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बेहतरीन काम किया, तो पूरे देश के लोग उनको बधाई दे रहे हैं. अब बिहार में ये विषय आया नहीं है. जब विषय आएगा तो देखा जाएगा सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या कानून लाएगी, उसके बाद ही नाम कुछ जो है प्रस्ताव रखेगी, तभी तो हम अपनी ओपिनियन दे पाएंगे. Loudspeakers are noisy, but the decibel levels of the politics around it are reaching a higher pitch every passing day. The opposition claims crackdown on loudspeakers is selective, a charge that the BJP government, like Yogi's, totally rejects. Bureau Report, India Today. All right, now Lieutenant General Manoj Pandey will be taking over as the 29th Chief of the Indian Army, replacing General Manoj Mukund Naravane. In fact, currently serving as a Vice Chief, Lieutenant General Manoj Pandey will become the first officer from the Corps of Engineers to take charge of the Army. In a military career spanning about 39 years, Lieutenant General Pandey held prestigious command and staff assignments in conventional as well as counter-insurgency operations in all types of terrains. Lieutenant General Pandey had also served as the Eastern Army Commander before taking over as the Army's Vice Chief. The Lieutenant General Pandey is the senior most officer when General Naravane retires.